9 years. The wait lasted 9 years, and we are here from where we left 2016 में. It took us 9 years to reach that stage again and correct our mistake. Fourth IPL final for RCB will be on 3rd of June or 4th of June. I'm not sure, but I think 3rd of June. Lots of time left, और आई डोंट नो क्या बोला जाए इसके बारे में. ओवरवेलमिंग सिचुएशन और सीजन का सबसे मोस्ट कंफर्टेबली वन मैच, सीजन का बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस, बैटिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ी आज. वी वर टॉकिंग अबाउट हेजलवुड और तुषारा साथ में खिला लेते हैं, शायद एक बॉलर आज कम खिलाते तो भी चलता. कृणाल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी आज. And we have reached the finals. We have to wait for a couple of days to know कि हमारा सहपाठी कौन होगा finals में. But yes, I don't know what to say. I will let Aditya take over from here. I mean, RCB has gone to. RCB has always reached finals whenever they have played qualifier one. Yeah. Says it all why it is important for RCB to end in the top 2 position. They did with a thriller, and today we are here with the most comfortable win. I don't know. I still remember the live we did after the auction, and we just decided to take one match at a time. Yep. This is where we landed with one match at a time. और एक और चीज जो we need to keep in our mind, what these so-called cricket experts had predicted about this team. इतनी खराब टीम है, like 83 करोड़ के साथ जस्टिस नहीं किया, and now after what 6 months of the auction, here we are at the top of the table. Sorry, second at the table, but first team to reach the finals. Veggies says one win away, but I don't want to talk about that match at all. Yeah, I don't want to think about that match at all. The only thing I want from two guys, not even anyone else, just two guys, is to make themselves available and come to the stadium, watch the match, and wear an RCB jersey. Those two guys are Chris Gayle and AB de Villiers. They need to be at Ahmedabad on 3rd of June, no matter what the situation is. We win or lose, वो बात की बात है. Yeah. Reached here, that is a huge milestone. Congratulations, brother. Congratulations to all of us.
यस, लेट्स टॉक अबाउट द मैच। सबसे पहले बात करते हैं लाइनअप के ऊपर। वी मेड जस्ट वन चेंज, वेंट विद द सेफर टीम। द बैलेंस वाज देयर। वी वेंट विद जस्ट वन चेंज, हेजलवुड को लेकर आए तुषारा के जगह पे, इवन दो ही वाज द बेस्ट बॉलर फॉर अस इन द लास्ट मैच। डिड नॉट बाइट अस एट ऑल। नहीं, आपको एबीडी अनलकी लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता ना सर। आपने तो थ्रू आउट द ईयर ही उल्टी सीधे बातें करी हैं कि आरसीबी ये मैच भी हार जाएगी, आरसीबी वो मैच भी हार जाएगी, आरसीबी से यहाँ चोक कर जाएगी, वहां चोक कर जाएगी। तो आई थिंक यू शुड बी द लास्ट वन टॉकिंग अबाउट अनलकी। एबीडी said he wants to lift the trophy with Virat. Yeah, yeah, in uh, his let's yeah, not talk about these things, okay? मतलब yeah. ठीक है, let's be It's happy, let's be overjoyed with happiness, but let's not decide what go the ahead final and is say about. those four Yeah, cursed words. Don't do anything. Don't even just manifest things in your head, then probably it will happen. Um, yeah, they went with a safer team. They went with Livingston in there. आज batting तो आई नहीं, but his contribution with the field was amazing. आज हमने when I was watching the match with Aditya and other friends as well. So one thing that I said was the fielding looks exactly like the fielding what Australia did in 2023 World Cup Finals. कि शॉटे मार रहे हैं वो, and they are not letting the ball go to the boundary at all. Suyash saved a boundary, Romario saved a boundary, Livingston saved a boundary, Phil Salt saved a boundary, and everybody was on their feet. I don't even remember a single misfield that happened today, apart from the extremely fantastic bowling that we have had today. Bhuneshwar also fielded very well. जितनी अच्छी bowling हुई है उससे अच्छी fielding हुई है, and I think a combination of these two has led Punjab to choke. Choke भी क्या ही बोलेंगे यार, but I think it was a very very important toss to win, which we did. We chose to bowl first, which was again a fantastic decision, because here at this live stream we were confused कि क्या करना चाहिए. Everything went to plan. Everything was executed to perfection. Hazelwood, another fantastic spell. Suyash has bowled the best spell of his life. Bhuvneshwar gave us a fantastic start. Yes, Dale was very good, apart from the one no ball that he bowled. Suyash also gave a wide four. तो अगर ये सब चीजें भी हम अगले मैच में सुधार के आए, then I think we have a solid chance. And I would like to add one more thing to that is अगर final में पंजाब ही आती है दोबारा, I am not going to discount them at all. yeah, I give them the same amount of respect that I gave them before this match, and I think they deserve all of it. They had a bad day. They lost an important toss. The conditions were extremely against them, and everything went against them, and vice versa. Everything went fantastically well for us, and that is the reason I think we found ourselves so comfortable today. I think यहाँ से overconfidence is the only thing that can let us down. That is why we need to be humble. Aditya, continue. yeah. What I would rather suggest for the one last match, what we call is just play like you 70 मिनट है always तुम्हारे wanted. पास. Yes, like something like that. अब इस Like 70 मिनट में चाहे जो हो, ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, खुदा भी नहीं छीन सकता. ठीक है, तो yeah, 40 ओवर है तुम्हारे पास, yeah, और ये 40 ओवर ऐसा खेलो कि ये 40 ओवर तुमको लाइफ टाइम तुम्हारी मेमोरी में बस जाए. yeah. There is a For real. web series on basketball. It is very famous. Uh, it is called The Last Dance. Chicago Bulls के they won 5 on a row or something like that. माइकल जॉर्डन की टीम थी, उसके ऊपर वो बेस्ड था. एंड द एंटायर पॉइंट ऑफ द सीरीज वाज, व्हेन यू आर प्लेइंग अ टूर्नामेंट, nobody will remember what you have done. Nobody will give a flying fuck about what you have done, as long as you don't win the last match of the tournament. Yeah, If you lose the last match of the tournament, no one will remember you. We keep talking about 2016 final just because we are RCB fans. Nobody gives an F about 2016 finals other than us. Everybody thinks that SRH is the deserving winners, which they probably are. But nobody gives the credit that yeah, RCB was also fantastic in 2016, because we lost the last match and we choked
in the last match. Yeah. One good thing And that happened today is Virat Kohli did not score runs, and the odds of Virat Kohli not scoring runs in back-to-back games is very less. what I would like to add is that, uh, see, we always spoke about one match at a time, and the only pep talk that might happen inside dressing room is that leaving the rest of the tournament, what they do on that day will matter the most, Yeah. like entirely to the entire team. So let's not go there. Uh, that talk, we are not prepared yet. We are Yeah. only prepared for today's कैसे देखेंगे भाई फाइनल? win. Yeah, no मेरे को idea. I don't even want to think about the finals. Imagine Same. living it in front of you. I think ये पूरा आईपीएल जो होता है ना, द ओनली मैच जहाँ पे प्लेयर्स कंफर्टेबल होते हैं मैच खेलने में, दैट इज क्वालिफायर वन, एंड वी सॉ Yeah, दैट टू. आवर गाइज वर नॉट नर्वस व्हाटसोएवर. बिल्कुल अपने फीट पे थे. नॉट एट अ सिंगल पॉइंट डिड इट फील लाइक द गेम विल गो अवे फ्रॉम अस. हाँ, वो जेमिसन का एक ओवर दैट विजिलस हैज मेंशन्ड, वो एक ओवर वाज द वन जिसमें थोड़े से शक आए कि क्या कुछ हो सकता है क्या. उसके अलावा थ्रू आउट द गेम, द थ्रू आउट द मैच, इट वाज अंडर आवर कंट्रोल. yeah. बट फाइनल्स में क्या ये लोग अपना नर्व्स कंट्रोल कर पाएंगे? द टीम हैज टू इंग्लिश प्लेयर्स and a couple of youngsters as well. Yash Dayal is a youngster, Suyash is a youngster. A couple of guys who have not won it for anybody. Mayank Agarwal is one of them. Virat is one of them. Will they be able to hold their nerves on the big night? Well, I mean, I think that they should, because this is probably not the only finals they've played. They would have played many They have finals, played lots but of finals. but Yes, yeah, again, uh, with RCB and finals, there is a bad past. Uh, but I think they'll just consider it as any other match. That's what I'm trying to say. Um, like, consider it as that one last match that you want to play, and showcase, do what you did today. It's as simple as that. Nothing's अभी gonna change much. recently, Maybe. या अभी अभी रिसेंटली केएल राहुल का एक इंटरव्यू हुआ था विद स्टार स्पोर्ट्स, where he mentioned that I and Virat even till date talk about what could have happened that day. And that day is not the 2023 finals which we are talking about. We are talking about the IPL finals of 2016. AB de Villiers was in the team, KL Rahul was in the team, Virat was in the team, Chris Gale was in the team, Shane Watson was in the team, but it was not good enough. The Galacticos were there only till the batting, but the bowling was very fragile, and we conceded, I think, 208 runs in that match or something of that sort. Yeah. Uh, this time around, it is a well-round team. All 10, 11 guys who are playing, all of them are playing to the best of their potential. I think एक बंदे का potential अभी भी निकलना बाकी है, which is रजत पाटीदार. And आज जब मैच चल रहा था and the wicket of Virat went, I said कि wicket of Mayank went, I said that कि final runs मेरे को रजत के बैट से चाहिए, and I want at least 1 6 from Rajat. And both of them happened right at the last. रजत ने एक छक्का भी मारा and रजत के बैट से विनिंग रन आए. And it won't be more poetic if it does it again on the big day. Private number is here with us. What a bowling, everyone has done their job perfectly. Just one more to achieve the dream. Yeah, right. और मुझे ऐसा जानना है कि of all the people who watch my live streams and are currently live, how many of you have watched the 2016 IPL finals live? Because if you have, then I am not like, I don't think that you would be so happy about it, or I Happy don't know. about Obviously, it. अंदर से you are happy that you are in the finals, but तुम्हारे Yes. अंदर वो है कि यार,
Like either you are going to go through a heartbreak that will stay with you, a scar that will stay with you for a decade, or a happiness, a happy moment that will stay with you for a lifetime. Nothing in between. I think it is going to be a match जो We'll not forget. हम चाहते भी हैं कि ये मैच हो, और हम Yeah, चाहते भी हैं कि यार रुक जाओ थोड़ा, आराम से बाद में कराना। both of these things. जैसे जैसे like we are at this state where tomorrow we will think कि यार IPL final आ रहा है, and we'll be very happy about it. And जैसे जैसे time will tick, our happiness will decrease and nervousness will increase. increase. Yeah, And we as fans will be going through these things. Imagine what that guy wearing jersey number 18 would be feeling. He has yeah, given 18 years of his career to this team, and he has seen the team come very close to doing what they have never done before, thrice. And this is the fourth time, probably the last time in his career, because you never know the way he is leaving formats. You never know when he leaves the IPL format as well. This might be the last time Virat Kohli plays an IPL final, and he has been very vocal about this thing, that I want to feel what it feels to have an IPL trophy, to win an IPL trophy. I think this is what I wanted to say, man. Aditya, if you have something, you can continue. yeah. I mean, I don't know. I can't express that what That is because might. we all are scarred. That is why we are very scared to celebrate. We're very scared to say something out loud. Nahi to all the kids who are watching, okay, all the people who are 16, 17, 18, 19 or lesser than that, I was, or we were the same as you are right now. We were the ones who used to say कि हाँ हाँ इस साल हम जीतेंगे, इस साल टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. We have done all that and failed over the years. Every time a good team failed potential, good team failed potential, great batting, poor bowling, great batting, poor bowling. Everything is good, but the big guns have failed to fire on a big day. On a big day, we have failed to step up. Every single year, all these things have happened, and over the years, we have become like this, that we are going to hold it inside us until it actually happens, if it happens, because we are very scared of another heartbreak, another scar. Because I don't know, the 11 years, the 13 years where not 13, 11 years where India did not win an ICC title. By the time 2023 2024 came up, we stopped talking about it. कि भाई होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, let's not assume कि कुछ होने वाला है. Now this thing has been happening to us for 18 years. And yes, we are 4 days away, not 4 days, actually 3 days away from adding another chapter to that. Probably it will be the final chapter, or it will be a continuation. I don't know मैं पीटर ड्रूरी कैसे बन गया हूँ आज. I've been talking about philosophical things way too much in this live stream, the last 20 minutes that I've noticed. But yep, I think all I can do is be philosophical today. Yeah, sometimes you get clueless of what do you want to talk, and I think Yep. this is one of such moments where क्या I have बात करेंगे bro? Tell me what do you want nothing to to talk say. about? Like yes, RCB played so well today. Touch wood, RCB were perfect, perfect. कुछ गलत नहीं हुआ. फील्डिंग परफेक्ट, बॉलिंग परफेक्ट, बैटिंग में भी क्या ही कर सकते थे, जो करना था कर दिया. Nothing wrong to say about this team. Jitesh has won you a match. Krunal has won you a match. Hazelwood has won you multiple matches. Krunal has won you multiple matches. Rajat has won you multiple matches. Virat has won you multiple matches. Salt has won you multiple matches. Mayank Agarwal has batted fantastically in the last match. He has won you a game. Bhuvneshwar has bowled very well. Yash Dayal has won you a game. Suyash has won you a game. Yes, the team is doing fantastic. Nothing. There is nothing to talk about. The lineup for the next match, probably we are sure what's going to play. We are I think almost confirmed that we are going to play unchanged as long as Tim David is not fully fit. Yeah,
which I Yeah. don't think he is. Uh, and I am ready to see Liam Livingston in red jersey, even if the worst player of RCB history. I don't know. Let give me a name. Worst player of RCB history. Sachin Baby. Sachin Baby. Chalo. If Sachin Baby is donning an IPL RCB jersey tomorrow, I'm going to support him. Not tomorrow, the nights of the finals. I'm going to support him. No matter who wears an RCB jersey, Ambati Raidu wears an RCB jersey, I'm going to support him. Alzari Joseph wears an RCB jersey and comes in as a replacement of whoever. I'm going to support that person. Ki you bowl the best 4 overs of your life. I am there with you. Does not matter who's playing. Does not matter what the pitch is. Does not matter what the toss conditions are. This is it. Final 40 overs. I hope the game does not last for 40 overs. The game gets over before that. The last thing I want is a close match in a final where RCB is playing. Yeah. वैसे फर्स्ट इनिंग्स के बाद अभी खुश नहीं था मुझे आरसीबी 49 ऑल आउट याद आ रहा था सो फाइनल नर्वसनेस इज देयर ऑब्वियसली नर्वसनेस इज देयर एंड yes what the team could do they have done the fans have done everything they could supported them through thick and thin over 2 decades and it all boils down to this on the nights of the finals more than the skills of the 12 players who will be playing we will need luck with us. And if luck is there with us, nobody can stop us. And if luck is not there, there is no chance in hell that we are winning, no matter how good the side is, no matter how good we play. We have seen Chris Gale and Virat Kohli hammer Sunrisers bowlers. And then a fucking Ben Cutting and Bipul Sharma come and destroyed RCB because the fate wanted something else. Now I don't know what the fate wanted. Maybe the fate wanted a closure in 2025. Maybe the fate wants a closure in, or maybe there is no closure at all. Maybe we'll never win it. Nobody knows. But here it is. These 40 overs are inevitable. Inevitable. If you want to see those, if you don't, there will be a lot of trolling. Okay, if we manage to not win it, even though winning an IPL is probably the most difficult, winning the it's the most difficult tournament to win. Nobody knows it better than us. But if we don't win it in the finals, we are going to get so trolled, and more than the trolling, the scar that it will leave is what is Is what we feel crushing me right very personal. Yeah, now. Yeah, that feeling from 2016. Some scars cannot be healed, and one such scar was 2016. probably 20, probably the scar might get healed in the next 4 days, and the thought of it is making me shiver a little. And I will be honest with you, this might sound very this might sound like a lie. I have not watched an IPL final since 2016. I have not watched it because it's like क्या point है भाई ये देख के like how will I be able to invest myself into it knowing that no matter who wins it's going it's like कुछ नहीं होने वाला मेरे लिए इसमें. I have not watched an IPL final since 2016 and after 9 long years in last 6 years the only thing I have been watching is eliminator, one odd qualified two. That's it. And finally I'll be watching an IPL final very soon. Final is in Ahmedabad. Who bats first, they will lose. I don't care. Toss matters if we win or if we will win or not. I don't care. I don't care at all, man. टॉस कैसा जाता नहीं जाता नहीं फर्क पड़ता. But I'm Even if against you that point actually. yeah Ahmedabad, if you score 230 plus, it's very rare chances that yeah the ones who are batting first have lost. और पिछले 2 मैचेस जो गुजरात खेली है दोनों में उन्होंने पहले बॉलिंग करी है 250 रन खाए हैं 230 रन खाए हैं Yeah. दोनों मैचों में
And Yeah. once the first batting side scores 230, your chances of winning the match go as low as 0.5%. Like in 100 in 200 games, probably you will win it once, chasing a score beyond 230. I think 230 plus chase हुआ है 2 बार, I think IPL की history में. Yeah. One So we did. yes, No, no, we didn't do it. we have We not done. crossed. Punjab has We done cr- once, and I think yeah. CSK has done. CSK. Yes. Yeah. So bat first or bat second does not matter. Play your best cricket, and the Ahmedabad pitch right now is flatter than a highway. So you can expect a high scoring finals. And if it is a high scoring final, I would probably back my bowling to go and defend it. I'm very scared actually, guys. So I Yeah. want the people in the comments to write something wholesome and not talk about the finals. But yeah, not talk about it. फाइनल आ रहा है, ठीक है. एसआरएस ने चेज किया था वो. फाइनल आ रहा है. We all know about it. We all should be excited about it. Even I am excited about it. But let's not talk about it right now. Let's talk about something wholesome, something positive about this team. What they have achieved over the last 2 months. Eden Gardens is good for finals, but unfortunately, this is like peak monsoon time in this part of the world. So Eden में final कराना would have been as bad as Ahmedabad का final that happened 2 years back. 2-3 दिन में final खत्म हो रहा है, and that also with Duckworth Lewis giving all the support possible to CSK. Yep, I think this should be it. I am really out of words right now. I am so proud of this Yeah. team. One more incident I would like to share with you. There were games where I was nervous before a game, but the only nervousness which I had was only because of the past track record of this team. Every Yeah. single day when I have logged in, or once I had gone to the stadium or watched it with friends, every single time, I have always, like, while entering, I always thought ki this team is very good actually. Anything can happen. Even though the odds seem to be against us, even though we have lost the toss, even though Hardik Pandya is bashing us, you never know, this team is good. और जो लोग बोल रहे हैं कि we need to bat first, sorry, we need to bowl first at Ahmedabad. Just imagine, we bat first at Ahmedabad, or let's imagine Whatever. we are Yeah. let Whatever. let's Let. imagine we are bowling first, okay, Yeah. okay, Yeah. and Gujarat and the opposition which we are playing against scores 220, okay, and now we are chasing it, and there is due, and in the 15th over they get the new ball. Will you be favoring a chase that time? That will kill you the second new ball. अगर पहले इनिंग में तुमने रन खा लिए. So the toss does not matter. If you are chasing, bowl well in the first innings. If you are batting first, bat well in the first innings. The first innings उसमें हम चाहे जो मर्जी कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हैं, bowling कर रहे हो, we have to give our 120% in the first 20 overs, and the next 20 overs can come as a support to that. Respect to Hazel God, respect to every single one. यश दयाल ने आते ही जो लेंथ पकड़ा, got the first wicket. Bhuvneshwar got another wicket. Suyash bowled so well. Krunal has won us so many games this season with the bat, with the ball. आपको याद होगा पहला मैच जो हम खेले थे, बहुत टाइम हो गया, ठीक है, पहला मैच खेले को 2 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने 1 हफ्ता हो गया. 22 मार्च को हुआ था शायद पहला मैच. सुनील नरीन एंड अजिंक्य रहाणे was thrashing us. मिडवे वी वर थिंकिंग कि 220 तो ये लोग बना देंगे. 220 थोड़ी चेज होगा हमसे. 220 तो हमसे लिटरली परसों चेज हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल. कृणाल पांड्या comes in, gets all the three middle order batsmen out. Next day we were playing CSK. Next match, Phil Salt batted at a ground where nobody else could bat.
चेन्नई के सारे बैटर फ्लॉप हो गए, आरसीबी का विराट कोहली वाज अ फ्लॉप, देवदत्त पडिक्कल केम, रन बनाए चला गया, रजत पाटीदार स्कोर्ड अ 50 बट इट वाज अ वेरी स्ट्रीकी हाफ सेंचुरी, 3-4 कैचेस ड्रॉप हुए थे, वहां पे फिल सॉल्ट ने 16 बॉल पे 32 कैसे बनाए। उस मैच के सेकेंड इनिंग में हमने जो बॉलिंग करी, उस मैच के फर्स्ट इनिंग्स के लास्ट ओवर में टिम डेविड ने 3 छक्के मारे। उसके बाद वाला मैच हम गुजरात से हारे क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन फर्स्ट अप, क्योंकि हम टॉस भी हार गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉस जो हम हारे थे। वहां पे लियम लिविंगस्टन खड़ा रह के 50 मारा, जितेश शर्मा वहां पे उसके साथ खड़ा हुआ, टिम डेविड ने वो मैच भी खत्म किया। वहां पे भी हमारे पास 160 का टारगेट था, हम नहीं जीत पाए बिकॉज द ऑड्स वेर, द कंडीशंस वेर टोटली Favoring. अगेंस्ट बोथ द Yeah. इनिंग्स। अगला Yes. मैच वेयर वी आर प्लेइंग अगेंस्ट दिस मुंबई इंडियंस साइड। दिस मुंबई इंडियंस आर द रियल मैड्रिड ऑफ cricket, best players in the world, and also gets accused of buying the umpires or whatever. I don't want to get into that, but the best players in the world: रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, तिलक, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या एक टीम में है। एंड फिल सॉल्ट गेट्स आउट अर्ली, उसमें ट्रेंट बोल्ट भी है। फिल सॉल्ट गेट्स आउट अर्ली, देवदत्त पडिक्कल एंड विराट कोहली स्टार्ट स्मैशिंग देम। देन रजत पाटीदार कम्स इन, ही स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। जितेश शर्मा आके बुमराह को मार रहा है, बोल्ट को मार रहा है, एज इफ दे आर गली बुलर्स। Hardik Pandya was taking the game away from us, and then Bhuvaneshwar Kumar bowled, I think, 3 or 4 Yorkers on the trot. A fantastic over. Josh Hazelwood bowled a fantastic over. Kunal Pandya, spinner, defended runs In the in last the over. last over. उसके बाद we played against Delhi, I think, जहाँ पे केएल राहुल beat us. वहां पे भी we lost the toss. वहां पे भी बारिश हुई थी फर्स्ट इनिंग्स में। वहां पे भी like the conditions were totally against us in both the innings. But still we managed a decent score. I think it was Tim David again who was scoring runs in that match. वहां पे भी हमने बॉलिंग अच्छी करी, वहां पे भी बारिश आ गई, जॉश हेजलवुड जब ओवर डालने आए थे और पिच सेटल हो गई। वहां पे भी हमने शुरू में 4 विकेट आउट कर लिए थे। Yeah. I think this game was followed by, if anyone can tell me what was the next match? Punjab. No. We did not lose back to back. Who did we play after that? We played Rajasthan again. Rajasthan again, Yeah. day match I think. वहां पे देवदत्त पाडिक्कल ने मार मार के भरता बनाया। वहां पे विराट कोहली ने 50 मारी। वहां पे आई थिंक फिल सॉल्ट के भी रन थे। डे मैचेस तो दोनों हमने इतने वन साइडेड बना दिए, लाइक दोनों जो डे मैच हमने खेले हैं पंजाब के अगेंस्ट और राजस्थान के अगेंस्ट, दोनों बिल्कुल ही कंपटीशन ही नहीं मिला, एज वन साइडेड एज इट कैन बी। Yep. This was followed by Punjab match, another home game, another rain affected match, another like rain के कारण overs restrict हो गए थे। वहां पे we came in with an intention to score as many runs as possible, and we had the worst possible outing possible. We were eyeing another humiliating first innings. Tim David आता है and takes us close to 100, जहां पे हमसे 50 नहीं बन रहा था। He scored a half century in that match. इसके तुरंत बाद आई थिंक ये मैच हुआ, उसके 2 दिन बाद वी आर प्लेइंग पंजाब, वी आर प्लेइंग अगेंस्ट पंजाब एट दिस वेरी स्टेडियम वेयर वी हैव वन टुडे। वी आर प्लेइंग एट मुल्लापुर। वन साइडेड मैच। भुवनेश्वर कुमार एंड जॉश हेजलवुड bowled probably the best death bowling that I have seen in a very long time. इससे पहले शायद मैंने 2014 में देखा था by नुवन कुलासेकर and लसित मलिंगा in the 2014 T20 World Cup finals. Probably they probably bowled 23 Yorkers, और जो 24वां हेजलवुड से नहीं गिरा that went for a 6. We won that match as well. सूर्य शर्मा Yeah. ने उसमें like held the middle overs, got 2 big wickets including Josh Inglis and probably Marcus Stoinis. Now after Punjab, who did we play RR. next? RR again. Yeah, after Punjab we played RR again. And I think that was also pretty one-sided match. Uh, I think we got all of them out. No, that was not a 9. one-sided match at all.
नहीं, Yeah. we took it to the last over. We did Yes. not score as many runs. We took it to the last over, and who was the bowler who bowled the final over? It was Yash Dayal again, I think. Yeah. 20th over, if I'm not wrong, was bowled by Yash Dayal again, and he managed to defend it against batters like Dhruv Jurel and Shimron Hetmeyer. Yeah. हेजलवुड ने उस मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी. भुवनेश्वर ने आई थिंक उस मैच की शुरुआत में मार खाई थी, बट आगे जाके कमबैक कर लिया था. Yeah. That was a very close match. या एंड कृणाल Uh, कृणाल का हर मैचेस में थोड़ा कंट्रीब्यूशन है. दिस वाज अ वेरी क्लोज मैच बाय द वे. दिस वाज प्रोबब्ली one of the first closest close matches that we played in this season. I think if I'm not wrong, this was followed by the Delhi Capitals match where we yes. played at Arun Jaitley. वहां Yeah. पे भी we Comfortable. found ourselves in trouble, and then No. Krunal Pandya came into bat. Yeah. Krunal came in at 4 or 5. No, we were in trouble. Rajat Patidar got run out, Yeah. and David Yeah. got Yeah. out, and Phil Salt got out. We were eyeing a loss. Krunal Pandya comes in, not the easiest wicket to bat on. विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप बनाता है, and the moment it feels like run rate is going to go through the roof, he takes the responsibility, says Virat, you stay till the end. He takes the responsibility and finishes the game. कितने रन बनाए थे? I think 70 odd he scored with a fantastic 75 or strike rate. 73 and not Yeah, out. yeah, Oh no. Yeah. 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 He was not out. Not He out. finished it. Yeah. I think Virat was Virat out. had Yeah. gotten out. Yes. 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 Yeah. Next match was against CSK, I think. Yeah. The closest one And as of now. yeah, the closest one. आयुष मात्रे चढ़ गया हमारे ऊपर. The game was gone. Again, brilliant death bowling. लुंगी एंगीडी pulled it back. हाँ, उस मैच में बहुत कैचेस छूटे, बहुत खराब फील्डिंग करी हमने. लुंगी एंगीडी pulled it back, followed by Bhuvneshwar Kumar pulling it back, followed by Yash Dayal bowling the best over of his life. If you remove that one beamer that he Nope. threw to Shivam Dube, was probably the thing that makes the over more beautiful. Considering that you did not have enough runs, उसके ऊपर you bowled a beamer that went for a 6. There was a free hit, and there was a batter like Shivam Dube out there. There was a batter like Ravindra Jadeja out there, and you still managed to defend it. This हम इस स्टेज पे थे कि आगे हम सनराइजर्स खेलते, हम लखनऊ खेलते, हम कोलकाता खेलते, wouldn't have made a difference. We were in such red hot form. This was followed by Josh Hazelwood's injury. इसके बीच में Phil Salt was injured. इसके बीच में Devdutt Padikkal got ruled out. इसके बीच में IPL got suspended. We come back. We have a poor outing against Sunrisers Hyderabad. We were उस मैच में भी we were going very strong. We were going very strong in the second innings. Yes, Virat got out and the chase collapsed. होना ही है यार. A player like Virat Kohli gets out, the odds of a chase collapsing are extremely high. No matter how good the team is, no matter चाहे कितनी बैटिंग आनी हो, उसमें भी we could have turned things around had Tim David been available. टिम डेविड Yeah. को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, नहीं तो वो मैच में कुछ कर जाता. दिस वाज फॉलोड बाय द लखनऊ सुपर जायंट्स मैच, जहां पे हमने बहुत खराब कैप्टनसी करी, बहुत खराब बॉलिंग करी, बट द बैटर्स मेड श्योर दैट वी क्रॉस द लाइन. बीच में एक कोलकाता का मैच वॉश आउट हो गया. एंड टुडे this was the most one-sided match that has happened in this In this entire season. season. Yeah. This is the RCB that I have always dreamt of. And आगे जाके 3 दिन बाद कुछ भी हो, 4-5 दिन, आई थिंक 31 का 31 का महीना है ये, आगे जाके कुछ भी हो, I am super proud of this team. And if we do not make it in 20, if we do not make it after 5 days, this is going to leave a bigger scar on my heart, way more than 2016. This team is not just about Virat Kohli, AB de Villiers, and Yuzvendra Chahal and Chris Gayle in the finals. This is the most well-rounded team effort that RCB has ever put. And that was the end of my monologue. Congratulations, man. One last hurdle.
कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे सुयश को ड्रॉप किया जाए? एब्सोल्यूट ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम ब्रिलियंट फ्रॉम एवरीबॉडी। अगर कृणाल से एक आधा ओवर कराते वो भी वो भी कुछ कर जाता। Yeah. एंड व्हाट अ ब्रिलियंट टाइम टू ब्रिंग बैक रोमारियो शेपर्ड। वी ऑल थॉट कि यार रोमारियो को लाने की क्या जरूरत है, सब अच्छा डाल रहे हैं, व्हाई डू हैव टू ब्रिंग द सिक्स बॉलर? बट इवन दैट वर्कड आउट फॉर द बाउंस व्हिच रोमारियो गॉट was the reason Omar Zai got out, and Omar Zai got sorry Harpreet Brar got out No. Yeah. just because the partnership broke। इसीलिए अगले ओवर में जाके अगले ओवर की पहली बॉल पे खत्म हो गया ओमर जाई भी। wouldn't have been possible without the Romario over। नहीं तो ये खींच जाते 120। and considering the kind of over Kyle Jamieson was bowling, वो पहला ओवर अर्शदीप डाला, दूसरा काइल जेमिसन डाला, तीसरा अर्शदीप डाला, चौथा काइल जेमिसन डाला। एंड अगर उनके पास थोड़ा और रन होता दे वुड हैव फॉट फॉर इट। वो मुशीर से बॉलिंग नहीं कराते, वो अर्शदीप को लेके आते जब तक बॉल स्विंग हो रही है, वो कराते रहते जस्ट लाइक अस। हमने भी 8वें 9वें ओवर में जाके स्पिनर लाया, वो भी वही करते। दे डिडंट हैव यूजी टुडे। अगर यूजी फिट होता देन यू नेवर नो, पंजाब कैन डू एनीथिंग। PBK's batters were stupid 100%. Apart from Nehal and Brar, maybe Priyansh, everybody got out trying to hit it out. English played a stupid shot, so did Shashank and Stoinis. Superb bowling from RCB, obviously. Couldn't agree more. Fantastic. Well summed up. Summarized. Yeah. Yep, I think this was the most one-sided qualifier that has ever happened. And yep, now I think it is also factual. Biggest margin of balls. 10 ओवर हमने खत्म कर दिया। We finished the match in exactly half the number of overs जो हमारे पास थे। मतलब आई होप कि हमको फाइनल में 30 ओवर मिल जाए चेस करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो होगा नहीं। बट ना ही नेट रन रेट का कोई सवाल था। बट दिस विन इज गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। नाउ द Confidence. ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम दिस टीम इज व्हिच दे ऑलरेडी वुड नो, जस्ट नो द सीरियसनेस ऑफ व्हाट इज कमिंग। ये पूरे सीजन the players have said, Jitesh has said, Krunal has said, he want to, I think even Tim David has said, कि we want to do it this time for the fans. This one is for the fans. इन्होंने फैंस को लिटरली सर आंखों पे रखा है इस सीजन। एंड आई वांट देम टू नो कि अगला जो मैच है दैट डिक्टेट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ द 2 मिलियन, नॉट 2 मिलियन, आई गेस 20 million. 16 मिलियन तो आई थिंक इंस्टाग्राम पे हो गए हमारे। 20 million. हाँ, the 20 million RCB fans, 2 करोड़ RCB fans। और जो ऑपोजिशन वाले हैं ना उनको बोल लेने दो वॉट एवर दे वांट टू से। ह्यूमैनिटी, हु विल सेव ह्यूमैनिटी, लेट नॉइज पोल्यूशन, लेट देम से वॉट एवर दे वांट टू से। Look, there are CSK fans who are against us and I totally agree with them। अगर मैं CSK फैन होता या अगर मैं RCB फैन होता और CSK फाइनल में होती तो मैं भी अगेंस्ट होता हूँ। अब मैं भी सोच रहा होता कि यार कोई भी आके इनको हरा जाए, मजा आ जाएगा, दैट इज फाइन। बट द अदर फैन बेसिस, including Mumbai Indians, including I'm in a group which has a lot of Delhi Capitals fans, Punjab fans, all of them are against us. And let them be, let them be. They would never know how it is to have a fan base. Let them be what they are. And today they have officially showed us that we are not the worst team in IPL. There is at least one worse team than us who crossed 100 runs by the way they did। And if you remember, पंजाब ने हमको आई थिंक 96 फॉर 9 कर दिया था। आज हमने उनको Yeah. 101 में निपटा दिया, तो वो बदला भी पूरा हुआ। And they had all rounders, by the way, in the batting या lineup. दे हैड 11 बैटर्स टुडे। इंपैक्ट प्लेयर Yeah. डाल के 11 बैटर लेके खेले हैं, वो 100 रन बनाए हैं उन्होंने। जब प्रेशर आया ना उन्होंने भी वो मनोज भांडे वाला मूव कर दिया, डेब्यू करा दिया मुशीर खान का, जा रन बना गया। इवन ही गॉट आउट फॉर अ डक। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई बोथ दीज टीम्स हैव नेवर वन अ ट्रॉफी। हमको नहीं पता प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है। बट दिस सीजन आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, कितने बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी हैव हैड देयर वॉल्स अगेंस्ट द बैक अगेंस्ट द वॉल, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो वापस मुड़ के आ गए वापस।
2016 was nothing in front of 2025. अगर आपका पॉइंट ये है कि 2016 में विराट कोहली was in an unreal form, the form which विराट कोहली is showing in the last 2 years is nothing short of unreal. वो बस सेंचुरी नहीं मार रहा, और वो सेंचुरी इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट 150 की है. अगर वो अपनी स्ट्राइक रेट 140 कर लेना, सेंचुरी भी बनने चालू हो जाएगी. सेंचुरी नहीं जिताती आपको मैचेस. T20 मैचेस आपको 150 का स्ट्राइक रेट ही जिता सकता है. एंड विराट कोहली इज रेप्लिकेटिंग द 2016 फॉर्म with a better strike rate. हम आज के दिन 2016 आईपीएल फाइनल हारे और आज के दिन ही हम फाइनल पहुंचे. गॉड्स प्लान. The only thing I want in the finals is there should not be a rain interruption. Not gonna lie, but the second over of Jameson did get me nervous. Got all of us nervous. But Salt played like a champ. Also didn't understand why Mushir was chosen as impact sub. Very excited for tomorrow's match also. I am not going to watch tomorrow's match. I will Same. definitely be keeping a track of the scores. I will not be watching qualified 2 because I have not watched a single playoff match जहाँ पे RCB ने नहीं खेला, and I would want to continue that. Not because I want to prove something, but because I will not be able to watch. I will not be able to watch it with focus, considering like कोई भी ये मैच जीते, how is it helping my team? Considering मुंबई इंडियंस अगर फाइनल आ रही है तो वो 3 मैच लगातार जीत के आ रही, 2 मैच लगातार जीत के आ रही होगी. And Mumbai Indians in finals is something that I would not want to face. At least, गुजरात टाइटंस अगर, हाँ, at least with the team who has a history of yep, what it has with the yep, finals. So Mumbai, both of them, RCB also has a history, Mumbai also has a history, and they are way apart. yep. Uh, I we think if remember I'm not I wrong, told you Mumbai that has never lost a final, yes, they have never lost a final, even if or it is have they against. lost one? No, they have I never. think they'll. Oh yeah, No, they have never. they've never lost the finals, even if it is against CSK. 2010 का फाइनल किसके बीच हुआ था? CSK एंड MI हुआ था. आई थिंक 2010 फाइनल वाज अगेंस्ट CSK MI. Under Rohit Sharma's captaincy, Mumbai has never lost a final. Acha. Yeah, and they have defeated CSK 4 times in the finals. Yes, So correct. yes, मुंबई इंडियंस इज अ टीम जो मैं नहीं फेस करना चाहूंगा नो मैटर व्हाट. और अगर गुजरात भी आ रही है ना 2 मैच जीत के, और वो 2 मैच है पंजाब और मुंबई, तो मतलब गुजरात हैज फाउंड देयर मोजो बैक. उन्होंने बटलर का रिप्लेसमेंट जो आया है उसने रन बनाने शुरू कर दिए, या तो फिर मिडिल ऑर्डर ने रन बनाना शुरू कर दिया. तो लाइक इवन आई वुड बी वेरी स्केप्टिकल टू फेस इवन गुजरात टाइटंस, कंसीडरिंग उनकी बॉलिंग ऑलरेडी अच्छी है. बॉलिंग उन्होंने Yeah. 230 जरूर खा रहे हैं, बट उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है. On top of that, अगर उनकी बैटिंग अच्छा करे, then even they are unstoppable. We saw that in the first half of the IPL. अगर और and the third is Punjab, the best team of the IPL so far, the team which ended as the table toppers in the IPL. तो तीनों ही टीम है ना, तीनों के तीनों टीम have the capability of winning it. कोई भी ऐसी हल्की फुल्की टीम नहीं आने वाली फाइनल में. Yeah. रियली विश्ड बेथल वुड हैव बीन हियर. मैंने जो मोनोलॉग दिया था उसमें मैंने बेथल का नाम लेना भूल गया. तो इमेजिन देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट दिस टीम. जो भी रिप्लेसमेंट आया ना उसने काम किया. देवदत्त का रिप्लेसमेंट आया मयंक अग्रवाल, उसने काम किया. अपना बेथल तो रिप्लेसमेंट नहीं था, बट प्लेइंग 11 में एज अ रिप्लेसमेंट आया था टू फिल सॉल्ट, उसने काम किया. रोमारियो शेपर्ड केम इन एज अ रिप्लेसमेंट टू लियम लिविंगस्टन, उसने काम किया. लुंगी एंगीडी केम इन एज अ रिप्लेसमेंट टू जॉश हेजलवुड, उसने काम किया. And now the only thing which would bring this entire thing to a whole circle is if Liam Livingston also performs in the finals and puts a full stop. 82 or 53, Jacob Bethel today in ODI. भाई Jacob Bethel has a very bright future. और इंग्लैंड वैसे तो has a very like a knack of giving titles of the next big thing to people. उन्होंने हैरी Yeah. ब्रूक को दिया था,
विल जैक्स को दिया, जेकब बेथल को दिया, मे बी ऑल द थ्री ऑफ देम आर द नेक्स्ट बिग थिंग्स, बट दिस गाय रियली इज समथिंग डिफरेंट। जो मेरे को हंगर हैरी ब्रूक और विल जैक्स में नहीं दिखती, वो मुझे जेकब बेथल में दिखती है। And he's the highest run scorer, by the way, today in the entire ODI. नाइस। मुंबई इंडियंस येट टू विन अ मैच एट अहमदाबाद। गुड मैन, गुड। Now that you have said it, even Rohit Sharma hasn't won it at Ahmedabad, which again hurts me a little bit. But okay. Yes, Aditya, I have been speaking for a long time. I will take. I'll give you the next couple of minutes. Whatever you want to say, how much ever long you want to say, you can continue, and after that we'll wrap this thing up. Well, I don't have any words to say apart from I how think the I have team said has everything. performed. Yeah, you have I've covered said so much. you have you have covered so much that probably even I wouldn't have told, or I wouldn't have been able to tell at this moment. Uh, the whole summarizing the entire season. At this point, the only thing I would do is put everything aside and just hope everything goes all right on the big day. Like, I have no expectations. I have no. I'm numb literally right now. Like, I don't have any feelings for or against. Like, I agree. I'm just sitting here, and I'm just sitting here knowing the fact that we are in finals. That's the end of my thoughts. Yep. Like, even if I want to force myself to think what's gonna happen next, I'm not able to. And this jersey is everything for me right now. Like, in this moment, yeah, it's So this everything. everything belongs to this logo right now. Yeah, yeah. Like, I have nothing to talk about. Even if I want to, I can't talk about it. Yep. मैंने भी like the first 10 minutes of this live stream, if anyone will go back and check it, कुछ नहीं बोला मैंने. I was just trying to bring words. I found it so difficult. I would want to add one thing. Mo Bubat and Andy Flyer. I have not read this comment. I'll read it with अपना पूरा time दूंगा मैं इस comment को. But Mo Bubat, Andy Flyer, when these two guys came, I was very skeptical about it. The Last only year. reason being, yeah, the only reason being Mike Hassan was doing nothing wrong. He was doing everything to perfection. He was someone who wanted RCB to win. He was a professor before professor. इस साल हम डीके को प्रोफेसर बुला रहे हैं, माइक हसन को हम 2020 से प्रोफेसर बुला रहे हैं. दैट इज व्हाई आई वाज अगेंस्ट मो बोबात एंड एंडी फ्लायर. और उसके ऊपर से दे ब्रॉट इन, दे मेड अ वेरी वन डायमेंशनल काइंड ऑफ अ टीम लास्ट सीजन which did not do well in the first 8 matches, and I had lost all hopes. अगर माइक हसन ने 4 में से 3 सीजन क्वालिफाई कराया है, या 5 में से 4, whatever, I forgot the numbers, आपको 100% रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अपग्रेड कैसे हुए. And now after this season, the kind of team that they have made, the kind of performance that they have had, I take my words back. Even if I hope this doesn't happen, I hope even if 3rd June does not go our way, I will not put the pressure of you have to qualify this time. Like otherwise, ऐसे तैसे कर दूंगा तुम्हारी. This is not going to happen next season. They have won my respect. They have at least given the confidence to me that they have the right vision, and they are willing to put in everything to build a superhuman kind of a team. क्योंकि अगर Yeah. आप ऑप्शन के एक दिन पहले जाओ ना, तो जितेश शर्मा would have been my last preference. उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, मे बी आई वुड हैव टेकन हिम. जॉश हेजलवुड, मे बी आई वुड हैव टेकन हिम. आई वुड हैव गॉन हैमर. I would have gone ham on getting back Faf du Plessis and Glenn Maxwell. They had a vision. आईपीएल ऑक्शन खत्म होने के बाद, एटलीस्ट फर्स्ट डे खत्म होने के बाद, तो वो विजन बिल्कुल अनक्लियर था. बट व्हेन द स्क्वाड
shaped up. So I got this feeling that this is a pretty decent squad, and I'm ready to back this squad. But never in my wildest thought did I think कि ये टीम इतना अच्छा करने वाली है. कृणाल पांडे someone who I have loved over the years, चाहे वो मुंबई में खेल रहा हो, चाहे वो लखनऊ में खेल रहा हो, चाहे वो बैंगलोर आ गया हो. I have loved him over the years. I always wanted him at RCB for the kind of a character he is. He came to RCB because of the vision of one man or three people or four people, but he finally came to RCB and he did what he did. I will read the comment now. Movabat and Andy Flower did what Mike Hassan would just miss out on. Still miss Mike a lot, but Mo and Andy have really taken the team to another level. I agree to this. What they had done in 2024 does not even resemble the same thing. Like, doesn't even, is not even 1% of what they tried this season. Last season they went like batting करेंगे हम, bowling नहीं करेंगे, 250 खाएंगे, 250 chase कर लेंगे. This is what Yeah. we went for in 2024. But this season, I don't know, it was Dinesh Karthik. I don't know if Mohababat and Andy Flower या Malolan का ये plan था to go for a strong bowling unit for the first time ever in IPL in RCB history. And the result is right in front of you. DK's inclusion and wonders for many players and personally for the development of Jitesh. Another day of thanking Jitesh for that innings. I agree, man. If you think Jitesh अगर वो inning नहीं खेलता, we wouldn't have been here. हम खेल रहे होते भाई कल एलिमिनेटर मुंबई के अगेंस्ट. घंटा जीतना था हमसे वो एलिमिनेटर. विराट कोहली हैज bad numbers. One concern, VK has not got good numbers in playoff today. 12 or 12. देखो भाई, in the last 6 editions of the IPL, we have played playoffs 5 times, and all the 5 times, no, 4 out of the 5 times, we have played the eliminator and gotten out. ठीक है. There was just one IPL जहाँ पे हमने 2 मैच खेले. तो yes, विराट कोहली मे बी एलिमिनेटर में अच्छा नहीं कर रहा, मे बी द फर्स्ट मैच ऑफ प्लेऑफ में अच्छा नहीं कर रहा, बट हाउ ऑफ्टन यू एज एन आरसीबी फैन, हाउ ऑफ्टन हैव यू सीन विराट कोहली फ्लॉप बैक टू बैक? आई थिंक आज विराट आउट हो गया, इट इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर अस. आई थिंक वो जो हम सनराइजर्स वाला मैच चोक कर गए थे ना, दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस. आई थिंक हेजलवुड का वापस जाना, हमारा हेजलवुड के बगैर जीतना, ऑल्सो ये भी पता कर लेना कि हेजलवुड की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी टीम में, हमारा टीम डेविड के बिना जीतना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ऑल्सो एक और ब्लेसिंग इन डिसगाइज बताता हूँ. हम जो गुजरात और पंजाब से हारे और दिल्ली से हारे ना बिकॉज ऑफ द पुअर पिच कंडीशंस, हमारी बॉलिंग इतनी पक गई है ना अभी कि हम 220 चेस करने उतर जाएंगे कल. लाइक वी हैव फेस्ड द शिटिएस्ट ऑफ शिटिएस्ट पिचेस, और वो शिटिएस्ट ऑफ शिटिएस्ट पिचेस हमको मिली है हमारे घर पे, जहां पे हमने एक टॉस नहीं जीता. 6 मैच हम खेले चंद्र स्वामी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव Yeah. लॉस्ट ऑल 6 मैचेस. Yes. All 6 matches we had the worst conditions with the bat and with the ball, and उसमें भी I think we managed to win couple of matches or maybe 3 matches. So yes, we are ready to play 3rd of June, and I hope the 20, 22, 24 people who are, however long the squad is currently, I hope they manage to keep a hold on their nerves. I really hope so. I want all of you guys to like the stream if you guys have enjoyed it. If you guys have missed it, I would really want you to go back and watch the live stream, considering I have really enjoyed talking in this live stream. Consider क्योंकि शायद ये चीज मैंने अपने अंदर बहुत टाइम से दबा के रखी हुई थी, and that is why I feel very good after having spoken so much after a very long time. Uh,
I know right now final is of the subject matter, but I'll still ask both of you: should Livingston be kept next year or released? If released, who do you think could replace him? देखो, I will give you a one-word answer and I'll let Aditya complete it. My one-word answer is actually a couple of lines I'll do. कि first of all, this is not the time, as you rightly mentioned. Nobody Yeah, अभी आरसीबी मैनेजमेंट में एक बंदे के दिमाग में थॉट नहीं होगा. yeah, But now that you have asked, Livingston has not done anything to stay in the team, and probably अगले साल auction में we will have better options which we can replace him with. pick. Yeah, Yeah, you can continue, Aditya. same thing. Uh, Probably somebody like Green can come in that squad, another Aussie who can bat at similar position of what he's doing right now. He can also finish games for his. Uh, but yeah, there's one more name, but I don't think so. He might get released from the current team, and I don't think so. He might also get a chance to bat at number five, which is Glenn Maxwell. So I don't think he's a good option. Yeah. He was if he was at two down, but not at three down. Uh, yeah, same goes with Will Jacks. He can't bat it that in at five. So I don't Yeah. think so. Except for Green, currently I have anybody in mind. बेन स्टोक्स इज एन ऑप्शन, बट बेन स्टोक्स के साथ But इशू ये रहता है कि एक तो बजट में नहीं रहता. injury pro. वैसे ग्रीन ग्रीन भी बजट में नहीं रहने वाला. ग्रीन के लिए हमको बजट बनाना पड़ेगा बाय रिमूविंग अ फ्यू प्लेयर्स. बट बेन स्टोक्स का प्रॉब्लम ये है कि ही विल नेवर इन अ मिलियन लाइव्स गिव इंपॉर्टेंस टू आईपीएल. Yeah, नेवर इन अ मिलियन लाइव्स. अगर कल आईपीएल फाइनल है ना, मैं श्योर नहीं हूँ कि इस बेन स्टोक्स गोइंग टू प्ले टुमारो. yeah. कभी भी रूल आउट हो जाएगा, कभी भी छोड़ के घर चला जाएगा, कभी भी प्रैक्टिस करने लगेगा. ही विल गिव अ probably a friendly match between his domestic state side more important than आईपीएल. अगर बेन स्टोक्स ने शेन वॉटसन जितनी, शेन वॉटसन ने हमको जिताया नहीं, अगर वो अच्छा करता तो हम जीत जाते शायद 2016 में. बट स्टिल what Shane Watson has done over the years in IPL is something that nobody else has ever done in Right. terms of Australian player, in terms of an Australian player. अगर बेन स्टोक्स शेन वॉटसन का आधा भी कर देता ना, सॉरी, अगर बेन स्टोक्स अपने पोटेंशियल का आधा भी कर देता ना, तो वो शायद शेन वॉटसन के लेवल का आईपीएल लेजेंड बन जाता. बट आज के डेट में आईपीएल में कोई पूछेगा भी नहीं उसको. आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर अगले ऑक्शन में बेन स्टोक्स मेक्स हिमसेल्फ अवेलेबल एंड गोज अनसोल्ड. Yes, he was recovering from a surgery. Yes, he was recovering from a surgery, and that's why he pulled out. But this is not the first time he pulled out of IPL. Yeah, yeah. Probably पिछले 7 8 9 10 साल में 4 5 बार उसने पुल आउट कर लिया. To an extent that a person like MS Dhoni decided to bench him after having paid 16 crores. अगर आपको याद हो, आई थिंक कौन सा 2023 का आईपीएल था शायद. Yeah, Country over IPL any day, any day. I will always criticize the West Indies player to choose IPL over his country, but not when it's fucking अनइम्पोर्टेंट मैच जहां पे आपका कोई बच्चे को आप भेज दो कैप्टनसी करने के लिए. if you are playing Zimbabwe or a series against West Indies where you are short of winning, you might as well send a beast inside. And also, having said that, he has taken IPL as a time to recover himself multiple times. He has and I not given IPL the respect that it deserves. I think we already have a likely replacement for Livingston, which is Jacob Bethel. Considering that he Yes. didn't get a chance to play at that position is fine, but the likely नहीं, जेकब replacement for मैथ्यूज 100% समवन हु इज गोइंग टू गेट रिटेन. ठीक है, तो अगर मेरे को बात करनी हो अभी कि कौन है वो प्लेयर जो अगले साल रिलीज होगा, probably I'll go with Livingston. I might. Who is another? Yeah, again. Who is another bowler or another player who you can remove, who has been bought for a good paycheck? You can only have one answer. That is Asik Salam. क्योंकि उसको मौके नहीं मिले. उसको भी मौके मिलते तो वो भी कुछ कर जाता. Even he is a fantastic player. नहीं तो आप किसको निकालोगे बताओ? Can you think of even one name? no, maybe they'll
release him back and buy him back for a lesser price. Rustic, yes, but नहीं मिलेगा सस्ता में. The moment you're removing, someone else will be ready to pay higher. हमने ज्यादा में नहीं खरीदा, हमने कुछ 6-6.5 में खरीदा था उसको. यश दयाल 5-5.5 में खेल रहा है हमारे लिए. Okay, RCB should get rid of Malolan quickly. चलो ठीक है यार, let's not get into negativity. मतलब Malolan, I know is not the brightest of talents when it comes to scouting or whatever, but this time the team which he was also a part of, which has gotten assembled, is doing wonders. And as I mentioned, 3 तारीख को अगर मलोलन भी आरसीबी जर्सी पहन के उतर गया तो मैं उसको भी सपोर्ट कर दूंगा. जस्ट लुक एट अटैकिंग कैप्टनसी. रजत पाटीदार की कैप्टनसी पे जितना बोलो उतना कम है. आई डोंट अंडरस्टैंड. रजत पाटीदार इज अ 31 year old guy. ठीक है. He has never captained Madhya Pradesh. He was always a mediocre player for a very long time until COVID. He gets a chance in with RCB, and वो जो एक सीजन खेला वहां पे भी he was very mediocre. What changed next year? अगले साल आया, put IPL on fire. आरसीबी का हार्ट थ्रॉब बन गया टू एन एक्सटेंट दैट अगला सीजन वो छोड़ दिया. अगला सीजन उसको सर्जरी थी, अरकिलीज हील इंजरी, व्हाटएवर, 1 year gone, still he was retained. 2024 में he makes a comeback, he has a good season. 2025 में he is the captain of the side, and up till 2025 he has no domestic captaincy experience. And 2025 में before taking the IPL captaincy, when he was offered, he said कि I'll talk to Chandu Pandit and I will take the Madhya Pradesh captaincy first. I'll see how does that work. He gets the Syed Mustaq Ali trophy में Madhya Pradesh की captaincy, and he Goes to takes the a final. mediocre Madhya Pradesh side to the fucking final. वहां पे भी he was the one man army. वहां पे भी Venkatesh Iyer could not score runs and everybody failed except for one man, Rajat Patidar. उसके बाद he took the captaincy of IPL, and from the very first match showed us कि भाई क्या चीज हो. Rajat Patidar will always remain a mystery for me. Like there are some players who are late bloomers. ठीक है, माइक हसी भी बहुत लेट ब्लूम हुआ था, बट रजत पाटीदार के लेवल का ब्लूम क्या, लाइक यू आर लिटरली एट अ स्टेज जहां पे प्लेयर से करियर खत्म होता है. विराट कोहली का प्राइम खत्म हो गया था बाय द टाइम ही रीच 31-32. पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहा है विराट कोहली इंटरनेशनल स्टेज में, एंड दिस गाय हैज पिक्ड अप द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ एट दिस टाइम ऑफ हिज करियर, जहां पे लोगों के करियर खत्म होने शुरू हो जाते. धोनी काइंड ऑफ अ मटेरियल, काम माइंडेड बट अटैकिंग सेम टाइम. I have not read this message fully, but I would like to add कि हमने पिछले 2 मैचेस में हेजलवुड को मिस किया 100%, बट जो हमने ज्यादा मिस किया वो है रजत पाटीदार की कैप्टनसी. क्योंकि इवन इफ देखो हेजलवुड तो सीएसके के अगेंस्ट भी नहीं था, वो मैच में भी हमने मार जरूर खाई, ठीक है, बट वी पुल्ड थिंग्स बैक, एंड द रीजन वाज रजत पाटीदार द कैप्टन. Rapa, Dhoni kind of material, calm minded but attacking same time. I agree. और but unlike Dhoni, he is, यार आपने कितनी बार देखा, हमने बहुत बड़े बड़े मैचेस जीते हैं, ठीक है, इस साल हमने ना 7 अवे मैचेस जीते हैं आज नहीं इस सीजन. आपने कितनी बातें सुनी है रजत पाटीदार के द कैप्टनसी के ऊपर, रजत पाटीदार द कैप्टन के ऊपर. हमने अक्षर पटेल के बारे में इतना सुन लिया फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल में, सेकंड हाफ में ही फिजल्ड आउट. We heard so much about Shubman Gill in the initial matches. Restart होते ही fizzled out. We have not spoken. I'm not talking about I have spoken enough. The experts, the so-called experts, कितनी बातें सुनी आपने रजत पाटीदार द कैप्टनसी के ऊपर, रजत पाटीदार द कैप्टन के ऊपर? नहीं सुनी होगी, because he has not taken the center stage. इस आईपीएल में ना आज कौन मैन ऑफ द मैच बना है, आई एम नॉट श्योर, आज चेक कर ले एक बार, बट कृणाल हैज वन अ मैन ऑफ द मैच, टिम डेविड हैज वन अ मैन ऑफ द मैच इन अ लूजिंग कॉज, रोमारियो शेपर्ड हैज वन अ मैन ऑफ द मैच, विराट कोहली हैज स्कोर्ड fucking 8-9 half centuries, of course he has won a man of the match, देवदत्त पाडिक्कल, फिल सॉल्ट,
Josh Hazelwood. I think even Yash Dayal has won a man of the match, if I'm not wrong. There are 10 players for RCB who have scored 50s in this season of the IPL. 10 players. हम हमेशा से 3 प्लेयर वाली टीम रहे हैं. 10 लोग हाफ सेंचुरी मार रहे हैं भाई, which is an all time high in terms of IPL. इससे पहले 2015 में किया था इन्होंने मुंबई इंडियंस ने, and they ended up winning the title. उन्होंने 9 मारे थे, हमने 10 मारे. This RCB side, this RCB captain, this RCB management is very, very special. What do you think we should consider Livingston or go with Tim Seifert? No change. I'm ready to go unchanged in the finals. What do you think, Adi? Same, unchanged. The only reason I'm saying that is because I think it's too late for us to change the team right now. And Yes. bringing in a new foreign batsman who is not used for the conditions, I don't prefer. Uh, it's okay even if Livingston scores at 100 strike rate and Yeah. I don't know, give us what 10, 12, 15 runs, I'll take it. But I would Yeah. prefer him to stay. We would actually look very stupid अगर हमने जाके फाइनल में जाके लिविंगस्टन को निकाल दिया. Yeah, थ्रू आउट yeah. द सीजन बैक किया है ना यार, एक मैच और खिला लो. Why do you have to give a chance to someone who has not played at all? Player of the match is Suyash. Yeah. So he has one. I think another. Yeah. Another entry into the man of the match list. Yeah. Man, this RCB unit, मैं जितना बोलूं उतना कम है. When I started the live stream around 10-15 मिनट मार्क पे मैंने बोला कि हो गया, I've spoken enough, I'll take the comments and I'll leave. 1 घंटा 10 मिनट हो गए इस लाइव स्ट्रीम and I can still go on and on about the team. This team is that good. This team is that special. And I don't care what happens on 3rd of June. I care a lot, but not in terms of respecting this team. Suyash was scouted by KKR from the streets of Delhi and groomed him and gave it to RCB, just idiot franchise, from Shami to Surya to Gill to Kuldeep to Suyash. I agree. And इस लिस्ट में सुयश को डालना is very, I think, बहुत early कर दिया. Yes, yes. The other guys have achieved a lot, and सुयश का आज लाइफ का बेस्ट पिला है. So let's take it easier. और रही बात, आपने इतने नाम दिए, इसमें से मैं एक आधा और ऐड कर देता हूँ. क्रिस गेल भी आपने दिया है हमको. केकेआर से आया था क्रिस गेल, एंड he became the all time player for us. Yes, केकेआर ने बहुत सारे बड़े प्लेयर्स रिलीज किए, एंड आई थिंक they need to be a little more, क्या बोलूं, a little more stable with the youngsters they have. When we look at it, small things mattered in us reaching the finals. Krunal's spell versus MI, Hoff's spell against RR, Yash and Shepard heroics against CSK. Cannot remember a lot, but you understand. If you want to remember, Yes. you can rewind the live stream and hear my rant. I've spoken about everybody. Were you saying something, Aditya? No, I was just agreeing to the point, but you have already summarized it. Nafrati Chintu. Very nice name. In place of Livy, we should get an Indian middle order batsman. I was very tempted to this option. Okay, I will not lie. I was very tempted इस ऑप्शन को लेके आज अभी से 5 घंटे पहले, when the match hadn't started. ठीक है, I literally said कि लिविंगस्टन के जगह पे एक इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाओ, मनोज भांडगे हो, स्वस्तिक चिकारा हो, या अपना स्वप्निल सिंह हो, एंड गेट नुवन तुषारा along with Josh Hazelwood. बट अब मेरे को नहीं चाहिए चेंज. This team has bagged Livingston today. भाई मैं आपको बता रहा हूँ, even though this might sound very stupid, अगर आप लोग agree करते हो, then please let me know in the comments. It would have been very, very tempting to play Josh Hazelwood and Nuwan Tushara together along with Bhuvneshwar Kumar. पिछले मैच में जो इन स्विंगिंग यॉर्कर, आउट स्विंगिंग यॉर्कर मारे हैं ना तुषारा ने, मैंने किसी आरसीबी प्लेयर को करते हुए नहीं देखा ऐसा. टेल स्ट्रेन का एक स्पेल आया था, उसमें भी शायद 2 ओवर तक किया था उसने. तुषारा मेंटेन्ड इट टिल द एंटायरिटी ऑफ द 4 ओवर्स, जहां पे बाकी सारे बॉलर पिटे जा रहे थे.
I have always wanted to see Lasith Malinga play for my team, but that never happened. And Nuwan Thushara के उस स्पेल में मुझे मलिंगा दिखा उस दिन. It was very tempting for me to have Thushara along with Hazelwood in the lineup. But उनके लिए भी रहा होगा. But they decided कि नहीं, we will go with this lineup. We are going to back Livingston till the end. And if the management thinks, if दिनेश कार्तिक thinks कि लियम लिविंगस्टन को और एक मौका मिलना चाहिए, तो मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आके बोलूं कि नहीं नहीं मत खेलो, तेरे को कुछ नहीं पता. ठीक है. अगर वो कल बिल्कुल नई 11 उतार देता, नई 12 उतार देता, मैं उस टीम को भी बैक करूंगा, चाहे कोई सेंस ना बना उस टीम. बिकॉज ही हैज ब्रॉट अस हियर. आई टेकन दिस कमेंट, ये तो किसी और के उसमें था. Devdutt Padikkal has to be given a lot of credit. Before the season, had very little hope, but changed himself as a batter. 100% agree. I have guts that either Venki or Rinku is coming to RCB next season. I doubt. KKR scouting of spinner is best, Suyash. Yes, I would kind of agree to that. Venki is coming to RCB, will be released by KKR. देखो अगर सस्ते में मिल रहा ना, then I'll take Venki. Venki is a very talented middle order batsman. ठीक है, पिछले सीजन आईपीएल जो जीती है केकेआर, उसमें वेंकी का बहुत बड़ा रोल था. बट आई थिंक वो जो प्राइस टैग का प्रेशर था, अलोंग विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड केकेआर, एक फिक्स बैटिंग ऑर्डर नहीं दे पाए उसको, a lot of things happened and he could not score. अगले साल अगर सस्ते में आ रहा है, then I am very happy to have him. Jacob plays at 5 for England. Yes. By the way, guys, whoever is watching, like the stream, subscribe to the channel, do all those good stuff. When you look at it in a way, it has been a season of redemption of players. Yes, yes, Devdutt, Suyash, Krunal not so much. Krunal तो अच्छा ही था यार. Krunal was very good for Lucknow. Jitesh and many others were struggling somewhere last season, but they came back very strong. I agree. I agree. It is like मनी बॉल एक मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है और आप स्पोर्ट्स फैन हो, देन इट इज अ मस्ट वॉच फॉर यू. मनी बॉल इज अ मूवी जो एक बेसबॉल टीम के अराउंड है, जो इतने पैसे नहीं होते उस टीम के पास, एंड इट इज अराउंड द स्काउटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द टीम. उस एंड इट इज अ रियल लाइफ स्टोरी बाय द वे. उस मूवी में Oakland A's is a team which does not have enough money, and they have to build a squad to compete for the championship. वहां पे they use stats and things and buy broken players जो fit नहीं बैठते टीमों में, जो बाकी जो हमको सस्ते में मिल जाए, but also suit our plan the best. They buy that team and the team goes on to win 21 matches in a row, which is an all-time MLB record. Something very similar happened this season with RCB. Having Jitesh Sharma, Tim David, Romario Shepherd over Will Jacks, the person who scored a century, I was sure कि भाई आरसीबी जैसा मैनेजमेंट है, they are going to retain Will Jacks भाई. वो रिटेंशन का कार्ड जो है वो विल जैक्स पे ही स्पेंड होने वाला है. आई एम सो सर्टेन, क्योंकि उसने एक सेंचुरी मार दी है, उसको अभी ब्रांड बना देंगे. एबी डिविलियर्स चला गया, वैसे भी ग्लेन मैक्सवेल से रिश्ते इतने अच्छे लग नहीं रहे. विल जैक्स हो गया हमारा अगला सुपरस्टार. बट उन्होंने वो नहीं किया. दे मूव्ड ऑन फ्रॉम They moved on from Faf. Faf ने कुछ गलत नहीं किया था. The 3 years Faf was in RCB, he had one poor season in 2022. 2023 he scored 700 runs. 700 runs at the age of 39. उसके अगले सीजन भी उसके रन थे 500 रन, तो अगले सीजन भी थे. Moved on from him. Glenn Maxwell से मूव ऑन करना इतना आसान नहीं रहा होगा, but they did. All credit goes to the management. RCB scouting from last 18 years, I'll just give negative marks. देखो यार, देवदत्त पाटिल तो हमने स्काउट किया था वैसे. मोहम्मद सिराज की स्काउटिंग किसी और ने करी थी, लेकर हम आए थे, उसको बनाया हमने. अपना चाहल केएल को हम लेके आए थे पहले. चाहल तो स्काउट किया था एमआई ने, लेकिन हम लेकर आए. वी गेव हिम द हाँ, मैचेस. चहल को स्काउट उन्होंने किया, बट बनाया हमने. या उसके अलावा आकाशदीप को भी शायद पहला मौका हमने ही दिया था. अभी आईपीएल में अच्छा नहीं कर रहा, बट हमारे टेस्ट सेटअप का हिस्सा है. उसके अलावा मयंक अग्रवाल को हम लेके आए थे. करुण मनीष नायर को हम पांडे वाज लेके आए थे. आल्सो. मनीष पांडे मनीष को हम पांडे लेके आए वाज थे. आवर्स. हाँ, विराट श्रीवत कोहली गोस्वामी वाज को हम आवर्स. लेके आए थे. विराट कोहली को हम लेके आए थे. तो ठीक है यार, इतने भी खराब स्काउटिंग नहीं रही है हमारी. Chris Gale रजत was लास्ट also. शॉट. No, Chris Gale was also maybe scout. He had a very नहीं bad नहीं, season. क्रिस गेल स्काउटिंग नहीं बोलो यार. क्रिस गेल वाज अ लेजेंड. क्रिस गेल के तो मतलब
Before Chris Gayle had a T20 career, Chris Gayle had a glorious Test career. तो Oh, क्रिस गेल तो मतलब I won't call him a scouted player whatsoever. Rajat last shot showed glimpses at him being yeah, I would definitely want this comment to be true. I also think that Rajat कहीं ना कहीं अपने मन में with the style with which he is batting, he अपने मन में ही सोच रहा होगा कि yes I am back. uh, एक सेकंड, ये लेट मी टेक दिस कमेंट. 250 रन है, कोई आग नहीं लगाया है. नाउ इमेजिन, ठीक है, ये 250 रन, मोस्ट ऑफ दीज 250 रन हैव कम इन द सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल. फर्स्ट हाफ में आई थिंक ही आल्सो मिस्ड अ मैच, ही स्टार्टेड ऑफ वेरी पुअरली. उसके बाद ही स्कोर्ड कंसेक्यूटिव 50s एंड और हर 50 अराउंड 20 बॉल 25 बॉल 26 बॉल में आई है. एंड द मोमेंट ही स्कोर्ड 50 ही वुड गेट आउट. तो द स्ट्राइक रेट वाज हाई ऑन द सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल, बट द एवरेज वाज नॉट दैट हाई. तो अगर आप आईपीएल देखते हो थ्रू स्टैट्स एंड थ्रू स्कोर कार्ड्स, you will never understand the importance of Rajat Patidar. Rajat Patidar. Kaushik has used 4 words which I don't want to say right now. Yeah. Today Suyash won man of the match. Excellent. Ifra Sheikh बोल रहे हैं DC wins. Super cricket presents here, DC wins. I remember. So कोई hate मत देना इनको. This guy, this is an inside joke of the channel, पिछले साल से चल रहा है. हाँ हाँ, आरसीबी चोक करेगी फाइनल में. ठीक है भाई, अपने ख्वाब देख लो. डीसी ने जैसा चोक किया है लीग स्टेज में, वैसा चोक तो हम नहीं करेंगे. टिम बाउ आएंगे फाइनल में, होपफुली भाई, होपफुली. अगर आ जाए तो ये डिबेट ही खत्म है ना, कि लियम लिविंगस्टन को खिलाना नहीं खिलाना. Yeah. आई ओनली वांट वन चेंज. अगर टिम डेविड अवेलेबल है तो उसको लेके आओ. अगर टिम डेविड अवेलेबल नहीं है देन लियम लिविंगस्टन को Same खिलाओ. आई score. डोंट हैव एन इशू. यश गोतवाल, हाय आरसीबी विन. यस. आरसीबी ग्रूम सुयश मोर, उसको सर्जरी करवाने भेजा. जेम्स पाइप का उसका केयर करना और मलोलन का उसका ध्यान रखना. आई एग्री टू दिस यार. आई थिंक इससे पहले भी कोई तो प्लेयर था, स्वप्निल सिंह. एट द एंड ऑफ हिज करियर मौके नहीं मिल रहे, बिल्कुल उस फेज में आ गया कि छोड़ दूंगा क्रिकेट. वहां से आया आईपीएल में, आरसीबी में. चलो, अगर पहले 6-7 मैचेस में हमने जो हग्गार मचाया वो नहीं मचाया होता तो नहीं देते हम चांस स्वप्निल को. बट वी गेव हिम अ चांस एंड वी गेव हिम कंसिस्टेंट चांस एंड ही डिड वेल. हिज लाइफ चेंज्ड एट आरसीबी. होप आरसीबी. नहीं नहीं भाई, हम मत मत बोले यार ये सब. calm down. I know you have not watched the 2016 finals and that is why you don't have the scar in your heart कि कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा. बट ठीक है. अच्छा, बॉलिंग कोच भी केकेआर का पोच करके लाए हैं आरसीबी. यस यस, आई नो एंड आई. ओमकार साल्वी के बारे में बातें नहीं हो रही हैं, बट आई थिंक इवन ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. एक तो नॉट जस्ट केकेआर, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द मुंबई साइड. एंड मुंबई को अगर आप डोमेस्टिकली जानो देन मुंबई जस्ट डजंट हैव अ लेगेसी. मुंबई हैज ऑलवेज हैड द बेस्ट टीम इन डोमेस्टिक. बेस्ट टीम, बेस्ट परफॉर्मेंस. और आई थिंक एक प्लेयर जो मुंबई का हेड कोच है, उसको आप लेके आ रहे हो एज अ बॉलिंग कोच ऑफ आरसीबी. लाइक, क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन. मैंने 4 नाम लिए, मैंने ओमकार साल्वी का नाम नहीं लिया. यू कैन ऐड ओमकार साल्वीज नेम देयर एज वेल. लिविंगस्टन का एक दिन तो खून खोलेगा ही. आई रियली होप सो. I still wanted this, and somehow there is a small part in me which still wants it. But honestly, going with the same lineup would be better, and playing Hoff and Nuan would be possible if we bat first. Yes, yes. If we bat first, then maybe there is a chance. Sorry, if we bat first, बोला क्या? Yeah, correct only. If we bat first, then there is a chance. But उसमें जैसे हमने आज मयंक अग्रवाल को रखा as impact, वैसे हमको लियम लिविंगस्टन को रखना पड़ेगा as impact. Yeah. आई होप आरसीबी फैंस केपी को उसका ड्यू दें जो एमआई और एलजी फैंस और टीम ने नहीं दिया. भाई, कृणाल पांड्या इज ऑलरेडी अ लेजेंड भाई. चेन्नई वाला मैच जो था, पीपल वेंट क्रेजी ऑन कृणाल पांड्या. कृणाल पांड्या का उतना अच्छा मैच गया नहीं था वो. पीपल इन द क्राउड वर चैंटिंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ. कृणाल पांड्या के नारे लगे हैं भाई. एंड आई थिंक कृणाल पांड्या इज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स एंड राइटली सो, डिजर्वेडली सो. मेनली सिराज से मूव ऑन किया.
टू या इवन सिराज से मोहन के, सिराज को भी रखना वुड हैव बीन वेरी टेम्पटिंग, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग सिराज का वो हो रहा था ना, ऑन सीजन ऑफ सीजन, ऑन सीजन ऑफ सीजन, ऑन सीजन ऑफ सीजन, तो आई थिंक इट वाज बेटर। और देखो, लॉयल्टी की बातें करते हैं लोग कि हमने सिराज को निकाल दिया, हमने सिराज को निकाला, दैट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद लॉयल्टी। लाइक ऐसा नहीं हुआ कि सिराज वाज गोइंग अनसोल्ड इन द ऑक्शन। अगर सिराज ऑक्शन में अनसोल्ड जा रहा होता और हम नहीं उठाते पैडल, देन इट वुड हैव बीन समथिंग अबाउट लॉयल्टी, अनलाइक a certain legend from the yellow jersey team. We really dodged a bullet. Yes, yes, absolutely agreed. वेंकटेश अय्यर अगर हम ले लेते 24-25 करोड़ में, देन खत्म हो जाती है हमारी टीम। लास्ट ईयर एसआरएच टॉप 2 में थी, लेकिन आरसीबी का सिर्फ एक विन उसमें कम था, बट एनआरआर ज्यादा था। मतलब आरसीबी पिछले साल भी हो सकती थी टॉप 2 में। हाँ, मतलब जीतने पड़ते ना मैच। एनआरआर अच्छा था वो तो ठीक है, जीतने पड़ते मैच, वो हम जीते नहीं पाए। भैया देखा है 2016 का फाइनल, डोंट रिमाइंड। हाँ, या एग्जैक्टली, नॉट सेइंग एनीथिंग, ओके फाइन। Have you both been watching IPL from start, and what made you a fan of RCB? Personally, for me, it was Virat Devi partnership in 2016 against Gujarat Lions Green Jersey. Very, very great match. Very great memory that you have brought. And yeah, Aditya, take. I the first time I have been a RCB fan since the start, 2008, 2009. I don't remember. And he is from Uh, uh, Bengaluru, by the way. yeah, I am from Bangalore, but what made me a hardcore RCB fan was 2011 Okay. finals. We lost. Yep. That's when I cried, and that's when I realized that, oh, this hurts. And that's when I realized I am I unknowingly became a very big fan of RCB. The loss made me realize that I was a big fan of RCB, by the way. But भाई देखो, I have been, लॉयल्टी आती है हार से, ठीक है। yeah, ग्लोरी हंटर एक सीजन खराब हो निकल जाते हैं, ठीक है। अह, देखो, आई एम वेरी सर्टेन, ये लॉयल्टी वाली बात अगर करें, अगले 5 साल भी अगर हम नहीं जीते ना ट्रॉफी, अगले 10 साल 15 साल भी नहीं जीते ना, तो फैन बेस तो कम नहीं हो रहा, ठीक है। चाहे जितने बोल रहे कि विराट चला गया तो फैन बेस कहीं नहीं जा रहा, फैन बेस। तुमने जिस टीम को हार में सपोर्ट कर लिया ना, तुम उस टीम को छोड़ ही नहीं सकते। रही yeah, बात मेरी, आई डिड नॉट स्टार्ट वॉचिंग क्रिकेट इन 2008। I am a person who lives in West Bengal. I started watching cricket in 2011. I was a KKR fan, considering West Bengal. I was a KKR fan in the initial days, 2011, 2012. और वो टीम से भी मेरा एक बहुत अच्छा लगाव था। गौतम गंभीर, सूर्या, मनीष पांडे, जैक कालिस, रॉबिन उथप्पा, लक्ष्मीपति बालाजी, भाटिया, अपना ब्रेट ली, पीयूष चावला, सुनील नरीन, ऑल ऑफ दोज गाइज, जैक कालिस, ब्रेंडन मक्कलम, had great मनविंदर बिस्ला, had a great bond, like शाकिब अल हसन, एक वो अटैचमेंट हो गई थी उस टीम के साथ में। One saw that team win matches twice, win the tournament twice, 2012, 2014। एंड उसके बाद 2014 के बाद क्या हुआ, अचानक से द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू लीव एवरीबॉडी। उसके बाद जैक कालिस भी चला गया, ब्रेट ली भी चला गया, आई थिंक मनीष पांडे था शायद, बट मोस्ट ऑफ द गाइस, यूसुफ पठान लेफ्ट, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स लेफ्ट, टू एन एक्सटेंट दैट मेरा अटैचमेंट ही खत्म हो गया, ठीक है। इन द मीन टाइम आई वाज इन 2015, आई वाज 13 years old. In the meantime, we lost the 2015 World Cup, uh, the ODI World Cup in Australia, and Virat Kohli was getting like accused of the loss. कि not just Virat Kohli, even Anushka Sharma, कि अनुष्का शर्मा आई और हम हार गए। तो उस टाइम पे, एंड विक्रांत गुप्ता was one of the instigators इसमें। विक्रांत गुप्ता is a very big reason that I am a fan of RCB. विक्रांत गुप्ता ने हदें पार कर दी सारी। आज तक में उसका एक शो आता था, और अभी भी आता है, एंड सारी हदें पार कर दी, एंड टू एन एक्सटेंट दैट ब्रेन वॉशिंग इतनी कर दी ना कि विराट कोहली सिर्फ पार्टी करता है, कुछ नहीं करता, टीम को डुबा दिया, कोई सीरियसनेस नहीं है, गर्लफ्रेंड्स को लेकर आते हैं ग्राउंड में, टू एन एक्सटेंट दैट आई फेल्ट लाइक भाई ये बंदा, लाइक टू एन एक्सटेंट दैट मेरे अराउंड जितने भी थे रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी स्टार्टेड स्पीकिंग शिट अबाउट हिम। एंड आई रिमेंबर यार, आज से 2 साल पहले 2013 में
ये बंदा 50 बॉल 60 बॉल में सेंचुरी मार रहा है, तुमको मैच जिता रहा है। 2014 में ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2015 में आल्सो ही हैज अ सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके बाद अगेंस्ट इन द सेमीफाइनल ही हैड वन बैड इनिंग्स। वहां पे भी ऐसा नहीं कि बॉलर को आलतू फालतू थे, जॉश हेजलवुड ने आउट किया था उसको, इफ यू रिमेंबर, No, 11 बॉल Mitchell पे एक Stark. रन। नहीं नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉश हेजलवुड ने बॉल डाली थी और आउट हुआ था। दैट बॉलिंग यूनिट हैड मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन एंड जॉश हेजलवुड। Yeah. विराट गॉट आउट टू दैट एंड द एंटायर नेशन वाज अगेंस्ट हिम एंड हिज गर्लफ्रेंड। उस टाइम मेरे को लगा यार ये बंदा, लाइक आई डेवलप्ड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम। एंड 2016 में आते आते, बाय द टाइम 2016 स्टार्टेड, आई हैड लॉस्ट ऑल माय क्या बोलते हैं अफेक्शन फॉर केकेआर, and I started watching Virat Kohli play in the IPL, and he had the season which he had. So 2016 was actually the season I became a fan of RCB, and we went all the way to the finals. Or finals, maybe we were at a winning position, just like the match against Sunrisers Hyderabad a couple of, a week back. Exactly 6 days from today, I think 23rd May को हुआ था वो match. That match reminded me of the matches I became a fan of RCB 2016 finals. Yes, एक match अगर मेरे को बोलना हो of RCB fan, probably it will be the match where Virat hit a century against Rising Pune Super Giants. He became out to Johnson. Oh, he was out to Johnson. Okay. Yeah, so I it was the couldn't. Rising Pune Super Giants match, where I became a fan of this team. I can't remember that innings actually. 2015. I Oh, he mean, played. there are too many people who troll Virat Kohli, uh, but if you see, the first match was itself against Australia, I guess, and we won it. Or was it against Pakistan and we won it? But Yeah, the I think top first three match were was against Pakistan. really good. They were really good in that We also season. defeated South Africa in the, I think, first match. South Africa had a wonderful side back then. Yeah, South Africa, we chased 300 something. That Probably. scored Not, 300 and not. I something. don't remember that match very clearly. I remember. I had a event to attend and I was coming back and नहीं, मेरे को जितना याद है, we defended the total. We we batted defended first, three and put up a score, yeah, and we yeah. defended. I somebody told me that three of those batsmen were enough to score that much, and I Yep. was very worried about it. that, Because वो that team was भी तो वो थी ना, yeah, yeah, 2015 World Cup side. If anyone doesn't know, openers were Hashim Amla, Faf du Plessis was there, AB de Villiers was there, JP Dumini, Jack Carlis was also there, I think, if I'm not wrong. No, Jack Carlis was not there. Dale Steyn, David Miller, Morne Morkel, Imran Tahir, like literally the greatest 11 players you can find. yeah. Like 307 was the score. Yeah, Hashim Amla, Quinton de Kock, Faf du Plessis, AB de Quinton. Villiers, David Miller, JP Duminy, Parnell. Who remembers this guy? Oh my God, he was Yep, the yep. only player who was not out. Wayne Parnell was the Finlander. Wayne Parnell came back from hibernation Yeah. in 2023 IPL, I think, and won us games. I think he came in as a replacement to David Willey. No, David Willey का replacement to Kedar Jadhav, I think. He came in as a replacement to somebody, uh, Yes, Kane yes. Richardson, I think, and he was brilliant for RCB. And their bowlers were Dale Steyn, Morny Morkel, and Imran Vernon Tahir, Philander. uh, Finlander. Oh my God. JP Dimini gave them a 10 over. Yeah. Future of Oh, RCB beyond Kohli. देखो, my thing is simple. विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर अगर आईपीएल छोड़ेगा, आरसीबी छोड़ेगा, 100% है कि a certain chunk of the fan base will go. But I am also 200% certain कि अगर एमएस के छोड़ने के बाद या रोहित के छोड़ने के बाद मुंबई और सीएसके का फैन बेस सपोजेडली जितना कम होगा 50% कम हो रहा है,
तो उस 50% का प्रॉब्लम 10% कम होगा हमारे फैन बेस का, क्योंकि Correct. मुंबई और सीएसके का फैन बेस इतना बड़ा है बिकॉज ऑफ द 5 ट्रॉफीज दे हैव। आरसीबी का फैन बेस इतना बड़ा है पार्टली बिकॉज ऑफ दैट जस्ट वन मैन, और उस आदमी के चक्कर में millions of people have watched hundreds of RCB matches and backed this team and went through it through thick and thin। और अगर आप एक टीम को इतना हारते हुए देखते हो उसके बाद या अगले दिन उठ के बोलते हो कि नहीं यार देखना है सपोर्ट करना है इस टीम को, तो शायद इतना इजी नहीं होगा ब्रो कि जस्ट बिकॉज विराट इज नॉट देयर आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस टीम एनीमोर। मतलब मैं अपना तो मैं सोच नहीं सकता। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस, अगर सपोज करो विराट छोड़ देता है आईपीएल, नो मैटर व्हाट ईयर, विल यू बी सपोर्टिंग गुजरात, लखनऊ, चेन्नई? चेन्नई को तो गलती से भी सपोर्ट मत करने चल जाना। अगर कोई बंदा आरसीबी छोड़ के चेन्नई सपोर्ट करने जा रहा है वो तो भाई गद्दार है। या डू यू गाइस थिंक यू विल बी एबल टू सपोर्ट अनदर टीम होल हार्टेडली? मजा आएगा क्या आईपीएल देखने का? मुझे तो नहीं आएगा। और इसको आदित्य को तो बोल के फायदा ही नहीं है भाई, बैंगलोर में रहता है। मैंने 2015 से स्टार्ट किया, सो स्टार्ट वाज वेरी नो 2015 वाज नॉट वेरी बैड एक्चुअली, वी क्वालिफाइड वर्ल्ड कप लॉस। अच्छा वैसे वर्ल्ड कप लॉस इन सेमीफाइनल, देन आरसीबी 2016, देन टी20 वर्ल्ड कप, देन 2017 आरसीबी कैंपेन। चलो छोड़ो यार, जस्ट हैप्पी टू सी आरसीबी लाइक दिस। 1 hour of stream, still having fun and listening carefully. Kudos to both. Thank you so much. Parnell was replacement of Hazelwood. Okay. Yeah, I think we have spoken enough. I have spoken enough. ये तो was a silent partner for me in the stream. Is Yeah. there anything you would like to say, like as a closing statement? We'll probably meet you all on 3rd June. That's it. See you Till guys on 3rd of June pre-game. You have been an absolutely fantastic audience and a great support system for me. Thank you so much for coming. I'll see you guys in the next one. 3rd of June afternoon. Stay tuned. Like the stream, subscribe to the channel. Bye bye.